Okay. Good morning, students. Today, class 9 physics, chapter 8, the motion chapter, last topic is there. That is the fourth video. Circular motion on circular path and polygon motion in polygon path or circular path. I have already written here. Repeating motion. Repeating motion means when motion repeats on its path, either it is circular path or polygon path. Okay. First of all, I have written here circular path. The body start its motion from A, anti-clockwise motion is there. A to B, B to C, and C to D, D to A. And it repeats its motion in this circular path. We have to find out the distance and displacement of this body. See, distance from A to B. You can see from A to B distance is this arc of quadrant. The circle's 1/4 part arc is AB. Arc AB is equal to arc AB. Arc AB, you can write here, arc AB distance will be shown by this arc. And arc of a circle, 1/4 arc, that will be 1/4 into 2 pi r. The total length of this circumference is 2 pi r. That's why 1/4, this arc AB will be 1/4 into 2 pi r. Now, if the radius of this circle, suppose that 7 meter radius is there, r is equal to 7 meter. It is given. Okay, students. Now simplify this 2 to 4, and pi is equal to 22 by 7 into 7 by 1 by 2. Now cut 7 to 7 and 2 to 22, 11 will come. Hence, the distance will be 11 meter. Okay? Arc AB is 11 meter. Arc AB will be the distance because it moves on this circular path. 1/4 part of the circle is 1/4 into 2 pi r. That's why, and r is 7 meter. I have calculated. Very easy. Now A to C. A to C distance will be half of the circle, that is the semicircle. Semicircle formula will be 1/2 2 pi r. 1/2 into 2 pi r. Half of the circumference. 2 pi r. Now you can cancel. Pi is equal to 22 by 7 into 7. Now cut. And 22 meter will be the distance from A to C. And now from A to D, 1/4 distance will be added to this semicircle. A to D will be arc AB, and A to D means what? 3/4. 3/4 part of the circle will be A to D. 3/4 into 2 pi r. 2 pi r is equal to 3/4 into 2 into 22 by 7 into radius r. 7 to 7 and this 2 to 2 and 2 will cut to this 22 or 11, and it will be 11 theta 33 meter. Okay, students. If you complete it one motion, then 2 pi r will be, and that is the 44. But I have written only 3 distance, A to B, A to C, and A to D. Okay. Likewise, the displacement will be calculated here. See, A to B. Displacement is the shortest distance from initial point to final point. See, A to B. This chord is AB. Chord AB is A to B, that is the displacement is equal to
length of chord AB. If you write here O, length of chord AB will be chord AB, length of chord AB. Chord AB is equal to, in right angle triangle AOB, hypotenuse is there, under root 7 square plus 7 square, 49, 49, 98, 98 is equal to 49 into 2, I mean 7 root 2 meter. That is the length of arc AB. And displacement from A to C will be diameter. A to C will be diameter AC. Diameter AC. AC diameter will be 7 plus 7 is equal to 14 meter. That is the displacement from A to C. And A to D. See, A to D in the initial point and final point distance will be this chord AD. AD will be equal to AB. Equal to length of chord AB. Length of chord AB. AB. Chord AB is equal to this chord. Length of chord AD. AD is equal to AB. AB is already find out. Here 7 root 2. 7 root 2 meter. Okay, students. This is over the distance and displacement from A to B. आप एक बार और देख लीजिए ध्यान से. ये सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है जिसका रेडियस 7 मीटर है. 7 मीटर में ये हमने मिलाया है दो डायमीटर को, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं. ए से बी पर जब जा रहा है तो डिस्टेंस जो कवर करेगा ये सर्कुलर पाथ यानी ये आर्क का, ए से बी तक जो 1/4 ऑफ द आर्क है इस सर्किल का उसको बताएगा. इसलिए आर्क ए बी लिखा गया है. और आर्क ए बी निकालने के लिए 1/4 ऑफ दिस सरकमफ्रेंस होगा. इसलिए मैंने लिखा 1/4 इंटू 2 पाई आर. आप 2 से कटा दीजिए. फिर पाई की वैल्यू 1/2, पाई की वैल्यू मैंने लिखा और 7. फिर कैंसिल करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 11 मीटर. ओके. ए टू सी ये जो पाथ है ये सेमी सर्किल का है क्योंकि सर्कुलर पाथ पर ही आप डिस्टेंस लेंगे. ठीक है. तो ए टू सी देख रहे हैं 1/2 आप सरकमफरेंस, तो पाई आर का आधा हो गया, कट गया. फिर पाई की वैल्यू और कैंसिल करने के बाद 22 मीटर आया. अब ए टू डी जब कह रहे हैं तो ए टू बी आया है 11, मैंने फर्स्ट में निकाला है. और ए टू सी 11 2 जा 22 आ गया. ए टू डी उसका 3 टाइम्स हो जाएगा. 11 3 जा 33. उसको मैंने कैलकुलेशन के लिए आप समझने के लिए लिख दिया कि 3/4 ऑफ द सर्किल होगा. 3/4 इंटू 2 पाई आर. आप एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो 33 मीटर आ जाएगा. ओके. अब आप डिस्प्लेसमेंट को देखिए. डिस्प्लेसमेंट जब आप देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. ए टू बी जो देख रहे हैं, ए टू बी जो ये डायरेक्ट लाइन है यानी इन सर्किल जो चॉर्ड बन रहा है, चॉर्ड ए बी लिखा गया है. चॉर्ड ए बी, लेंथ ऑफ चॉर्ड ए बी जो होगा ये होगा. और इस चॉर्ड की लेंथ जो होगा यहाँ राइट एंगल जो दोनों डायमीटर जहां कट कर रहे हैं वो है ए वो बी ट्रायंगल राइट एंगल है. उसका हाइपोटेनस जो है ये चॉर्ड ए बी है जिसके दो साइड सेमी मतलब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है. तो हाइपोटेनस जब आप निकालेंगे 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट में तो 98 का स्क्वायर रूट जो होगा 7√2 मीटर. ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी. इस चॉर्ड की लेंथ आ जाएगी. अब करें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी. ए टू सी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो शॉर्टेज डिस्टेंस देखिए यहां से ए से सी को लाइन मिलाए हैं जो डायमीटर को शो कर रहा है. ये डायमीटर ही ए टू बी ए टू सी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट शो करेगा. तो हमने ए टू सी के लिए डायरेक्ट लिख दिया डायमीटर ए सी
और डायमीटर जो 7 रेडियस है तो उसका डबल हो गया, 14 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी, देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ए टू डी लेंथ ऑफ द चॉर्ड एडी, शॉर्ट एडी देखिए अब जब ए टू डी आएगा तो शॉर्ट डिस्टेंस एडी हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसको 4 जो चॉर्ड बन रहे हैं वो इक्वल चॉर्ड हैं, ठीक है, इक्वल चॉर्ड है क्योंकि उसके रेडियस जो 7 फिक्स है। तो ये जो ए बी का वैल्यू होगा वही बीसी होगा, चॉर्ड बीसी, चॉर्ड डीसी और चॉर्ड बी ए बी होगा। तो एडी निकाल रहे हैं तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया ए टू डी लेंथ इक्वल टू चॉर्ड एडी, एडी इक्वल टू ए बी, वो चॉर्ड आर इक्वल, दैट इज द ए बी चॉर्ड ए बी 7√2 मीटर, दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, now we will see the further diagrams. Okay students, now we will see the these diagrams, second, third, fourth and fifth. These are the also repeating motion. Repeating motion may be circular, rectilinear, polygonal path, maybe, and circular path we have done the numerical questions also, and we will find the displacement and distance from rectilinear path. Rectilinear path, the straight line motion. If a body moves from A to B and again go backward from B to A on the same path, same length, then the distance and displacement we have to find out. First, distance from A to B. A to B distance is equal to, if it is 100 meter, then distance will be A to B and B to A. A to B and B to A. It is repeating motion. B to A is equal to, A to B is 100 meter, B to A is also 100 meter. So 100 meter plus 100 meter is equal to 200 meter. That will be the distance from A to B and B to A. Okay? On the first and second figure, and for figure number 3rd. I am writing figure 3rd. It is triangle ABC. The polygon, the smallest side polygon is triangle. If the body is moving at a triangular path, the path length is 5 meter, 5 meter, 5 meter. Suppose, then the distance from A to B, distance from A to B. A to B distance will be 5 meter. And distance from A to C. A to C will be 5 plus 5 is equal to 10 meter. And displacement from A to B. A to B will be 5 meter only because it is shortest distance, and displacement from A to C, displacement will be how much? A to C, that is only 5 meter. 5 meter from initial to final distance. Okay, students, this figure second, figure third is also completed, and now we have to solve the fourth and fifth.
for the fourth figure. You can see it is a square path, and A to B distance will be distance A to B is equal to how much? A to B, that is a 5 meter only. Distance A to C. A to C anti-clockwise. A to C, that is 5 plus 5. 5 plus 5 meter is equal to 10 meter. And the A to D distance A to D is equal to 5 plus 5 AB plus BC plus CD. That is the 3 times 5. 5 plus 5 plus 5 is equal to 15 meter. Okay, student. Now it is also completed. Distance completed. Displacement see. See for figure 4th, displacement. From A to B, displacement A to B. A to B, distance and displacement both will be 5 meter only. And A to C. A to C, what will be displacement? See the figure. A to C is 5 plus 5. Displacement will be A to C, this length of this diagonal AC length will be under root 5 square plus 5 square according to Pythagoras formula. Hypotenuse is equal to right angle triangle is ADC. 5 square plus 5 square is equal to 5 square plus 5 square is equal to how much? 10, 25, 50. Under root 50 is equal to 5 root 2. 5 root 2 meter. Okay, 5 root 2 meter. Can you see or not? See? Okay. That is a 5 root 2 meter displacement from A to C, and A to D displacement will be how much? Displacement from A to D. A to D is only shorter distance AD, that is 5 meter. AD is equal to 5 meter only. Okay, completed this questions also. And the last figure, see the solution here for the figure number 5 solution. You can see it is hexagon, regular hexagon is there. If the length of this regular hexagon is 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter only, then the distance from A to B, distance A to D, I am writing distance A to D. A to D distance is 5 plus 5 plus 5. 3 times 5 plus 5 plus 5 is equal to 15 meter. Distance from A to D for the figure number 5, and displacement A to D is equal to this length. You can measure this length of AD.
AD. AD can be measured. You can measure this length. I think 15 meter it will be, not 15. AD length, how much length will be? That is the displacement, this short distance. Okay, thank you.